Hello students, today I am going to explain you about the asymptotic notations. This is your third topic in the introduction part. First topic was algorithm. In that video, I explained you what is an algorithm, how to write an algorithm, what is the definition of the algorithm. Our second topic was time complexity. In the time complexity, I explained you what is prior analysis, what is posterior testing, what is average case, best case and the worst case. In the time complexity only this topic asymptotic notations come here, but they have mentioned it as a third topic. So our third topic is asymptotic notations. What is this asymptotic notations? As I told you earlier, asymptotic notations are nothing but used to represent the time complexity of an algorithm. As I told you earlier that we use different terms to represent the different things. Like if you want to represent the time, generally we represent in seconds and minutes. If you want to represent the distance, we represent in meters, kilometers, like that. Same way, to represent the time complexity of an algorithm, we take help of the asymptotic notations here. So you can say that notations are nothing but the part of time complexity of a algorithm. Okay, this is very important topic for you in the external examination. Among these three, this one is the most important one. Directly he'll ask the question, explain what are the asymptotic notations. Okay, now we have so many notations, but majorly we use three notations to represent the time complexity. The notations are O notation, omega notation, theta notation. Now I'll explain one by one notation here. The first one is big O notation. So this is your big O notation. Okay, as I told you, we deal with only these three notations. These three notations are very important for you. So notation. In the external examination, if he asks you to explain the asymptotic notations, remember that he is expecting you to write the definitions here, not the normal explanation. Okay, if you want with the definition, if you want to give the normal explanation, that is up to you. But remember that whenever in the final examination you will see the question like asymptotic notations, you have to write the definitions for them. Okay, now first one is big O notation. What is the definition of the big O notation here? Your f of n is equal to O of g of n if and only if there exist positive constant c comma n naught such that he has given one condition for all n is greater than n naught. Okay, now what are the different terms we are seeing here? F of n is different for us, g of n is different for us, n itself is also different term for us. O notation, because it is a O notation, I am writing an O here. Okay, that is comfortable. Now what is this F, G and N here? In the last video, I explained you what is prior analysis and what is posterior testing. What is the best case here and the worst case. Now I am taking help of the terms and I am trying to define the O notation here. What it implies? The first point is your n. Your n is nothing but is equal to number of inputs or outputs. What is this n? The number of inputs and outputs. He is saying that the time of the algorithm depends even on the number of inputs and outputs. How? Let me take a simple example. If I ask you to sort 3 numbers and 30 numbers, the time is different for the two algorithms or not? For the two programs or not? Yes. Sorting of 3 numbers will take less time, where sorting of 30 numbers will take more time.
So he come to the conclusion that even the time of the algorithm or the time of execution of a program depends on the number of inputs and outputs also. That's why he has taken help of the variable called n. That is nothing but the functions you are writing here. So n is clear for us. That is number of inputs or number of outputs. Then what about f of n and g of n? O is the representation. Leave about that. Now let me go for the next one. That is f of n. Your f of n is nothing but your posterior testing. Your g of n is nothing but your prior analysis. The unknown terms for us is f of n. I am saying that your f of n is nothing but posterior testing. O is used to represent. That is, we are representing the time in O notation. G of n. G of n is nothing but your prior analysis. Your n is nothing but your number of inputs and outputs here. What is prior analysis and posterior testing? As I told you in the last video. In the last video, I explained you neatly what is prior analysis and what is posterior analysis, posterior testing. Or you can say that prior analysis is nothing but estimated value. Posterior testing is nothing but your exact value. Now let me show how it is going to be worked. Your exact value is equal to O of your estimated value. And what is the relationship between your estimated value and your exact value is this one. What is the relation here? Always your f of n is less than or is equal to g of n. What it implies, because time we don't represent in a negative, that's why he has taken the modulus, because always time will be represented in a positive manner. So f of n, your exact value is always less than or is equal to your estimated value. It means I will take the worst case. I am writing the maximum time here, so that when I go for the implementation of that program, the program is going to be completed either equal to this time or less than this time. What it implies? Let me take a simple example. If I have written the time complexity of a program, of an algorithm A is equal to O of 10 seconds. What it means? It means that you are saying that O of 10 seconds means when I convert this algorithm into the program execution will be completed either by 10 seconds or before the 10 seconds, but not more than 10 seconds. Means you are representing the maximum time. If you are representing the maximum time, what case we call it as? Worst case. As I explained you in the last video, what is a worst case? So your O notation is used to represent the worst case of the algorithm. It's nothing but the maximum time you are representing here, and before that only your program may be complete the execution or equal to that, but not more than that time. Then if I want to represent the maximum time, then I will select O notation here. Okay, this is about the O notation. Let me explain once again. N is equal to number of inputs, posterior testing and prior analysis. And what you are representing here? You are representing the worst case here. Okay, this is about your O notation. Okay, let me take a normal example here. अगर हम लोग एक सेल फ़ोन रिपेयर पर्सन के पास गए तो क्या बोलता है? अगर हम उनको बोल देते कि हमारा सेल फ़ोन रिपेयर है, इनको रिपेयर कर दो, वो क्या बोलता है? ही यूज़ द टर्म्स लाइक
मैडम ये तो मैक्सिमम 10 सेकेंड 10 मिनट में इसका काम हो जाएगा। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लगेगा बोलता है। वो ज़्यादा से ज़्यादा को ओ में रिप्रेजेंट करते हैं बस। हम लोग कंप्यूटर में ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम वैसे बोल के बोल नहीं सकते ना, इसलिए उसको टेक्निकली क्या कर रहे हैं हम इधर ओ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, दैट इज अबाउट द ओ नोटेशन हियर। नाउ द सेकंड नोटेशन इज ओमेगा नोटेशन. Again you can see the definition. F of n is equal to omega of g of n if and only if there exist positive constant c comma n naught such that the condition here for all n is greater than n naught. Here also the same thing, n is equal to number of inputs. F of n is nothing but your posterior testing, g of n is nothing but your prior analysis. Now what are the changes we are observing here to the previous notation and this notation is the representation. There we used O notation, here we are using omega notation. And what is the other change you are observing here? The condition. There you are writing your f of n is always less than or is equal to c of g of n. But here you are making it as a greater than or is equal to. By seeing the condition, what you can observe here? It is nothing but always your estimated assumption value, assumption time. The estimated time is always less than the exact time. Means आपको जो estimate कर रहे हैं टाइम, उससे आपको ज़्यादा भी लग सकता है या फिर equal लग सकता है। इसका मतलब क्या है? You are taking the minimum time here. एक प्रोग्राम में कितना मिनिमम टाइम लग सकता है, दैट यू आर टेकिंग द मिनिमम टाइम. इफ यू आर कंसिडरिंग द मिनिमम टाइम, व्हाट इज द केस हियर? दैट इज नथिंग बट योर बेस्ट केस. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दिस बेस्ट केस इन द लास्ट वीडियो. सो इन ओमेगा नोटेशन यू आर कंसिडरिंग द बेस्ट केस. और सिंपल बताना है बोले तो लेट मी टेक वन एग्जाम्पल. इफ आई एम राइटिंग द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द algorithm A is equal to omega of 10 seconds. इसका मतलब है अगर हम इस algorithm को प्रोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो कम से कम 10 सेकेंड तो लगेंगे ही. आपका एग्जीक्यूशन 10 सेकेंड में भी ख़त्म हो सकता है या फिर इट मे टेक मोर देन दैट, उससे भी थोड़ा ज़्यादा लग सकता है. बहुत ज़्यादा नहीं लगता, थोड़ा इधर उधर हो जाता है, बट ये मिनिमम टाइम है. सो वेन एवर वी आर टेकिंग द मिनिमम टाइम, दैट केस वी कॉल इट एज ए बेस्ट केस. ओके, इन द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आई डिस्क्राइब्ड दैट. ओके, सो एंड इफ वी गो फॉर द रियल टाइम एग्जाम्पल, सेम थिंग. अगर हम एक फ़ोन लेके फ़ोन रिपेयर पर्सन के पास गए तो वो क्या बोलेंगे? हम पूछेंगे कि कितना टाइम लग सकता है ये फ़ोन को रिपेयर करने के लिए. देन वो बोलता है इसको रिपेयर करने में तो कम से कम 10 सेकेंड लगेगा. अगर आपको कम से कम वर्ड सुनाई दिया तो उसका मतलब है ओमेगा. अगर ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकेंड लगेगा. अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा सुनाई दिया तो उसका मतलब है ओ नोटेशन. कम से कम को आप ओमेगा में रिप्रेजेंट करेंगे. इधर आप इधर तो नहीं लिख सकते ना, मिनिमम मैक्सिमम ऐसा नहीं लिख सकते, कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा नहीं लिख सकते हम कंप्यूटर टर्म्स में. वी यूज़ सम टेक्निकल वर्ड्स हियर. सो कम से कम को हम इधर ओमेगा में रिप्रेजेंट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा को ओ में रिप्रेजेंट करेंगे, एवरेज को थीटा में. दैट वी विल डिस्कस लेटर व्हाट इज थीटा नोटेशन. ओके, इज दिस क्लियर फॉर यू? मैक्सिमम ओ में रिप्रेजेंट करते, मिनिमम ओमेगा में रिप्रेजेंट करते. नाउ वी विल गो फॉर द थर्ड नोटेशन, दैट इज थीटा नोटेशन. Now the third notation is theta notation. You can observe here again same f of n is equal to, here representation we have changed it as a theta, and the constants. I have taken 3 constants here. Before that I have used only 2 constants, and the condition is also changed. That is your g of n. Your estimated value is sometimes less than exact value and sometimes greater than the exact value. It means you are dealing with a average case. Nor the maximum nor the minimum.
okay, average case. Again same, n is equal to number of inputs, f of n is equal to posterior testing, g of n is equal to prior analysis. No change in that. Now what it implies? Say for example, if I say that the time complexity of an algorithm A1 is equal to theta of 10 seconds. इसका मतलब है अगर हम लोग A1 को प्रोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो उसका एग्जीक्यूशन टाइम आइदर इट कैन बी लेस देन 10 सेकेंड्स और इक्वल टू 10 सेकेंड्स और मे बी more than 10 seconds because this is your average case here. आपको exact, जब ये तो estimated value है, हमारा g of n क्या है, estimated value है, हम estimate करके इधर लगा दिए 10 seconds, वो है average case. अगर आप exact execution में जाएंगे तो आपको इससे कम में भी हो सकता है execution, equal में भी हो सकता है या फिर ज़्यादा भी हो सकता है. तो इतना टर्म्स को कंसिडर करना है, इसलिए हम लोग थीटा को भी उतना इम्पोर्टेंस नहीं लेंगे. अगर इम्पोर्टेंस का आप क्राइटेरिया बनाएंगे तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलता है ओ नोटेशन को, नेक्स्ट मिलता है थीटा नोटेशन को, लास्ट में मिलता है ओमेगा नोटेशन को. ओके, सो दिस इज अबाउट द थीटा नोटेशन हियर. रिमेंबर हियर दिस इज ए एवरेज केस. Okay, you are considering the minimum and maximum, उसके बीच में टाइम है. Okay, no need of getting confusion. You can see my last video, there I explained you what is a average case. That is ज़्यादा भी नहीं है कम भी नहीं है, बीच का जो वैल्यू है वो ले ले हम लोग उसको बोलते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं थीटा में. सो इट इज़ कॉल्ड एज ए थीटा नोटेशन. Now I have written the order of the O here. It's nothing but the time complexity. If I say that algorithm 1 takes the time complexity of O of 1, it means it is very very less time. उससे भी थोड़ा ज़्यादा होता है log n, उससे n log n square. This is the order of the time of execution here. Okay. Now let me take a simple example here. Let's take, I have given one task. For the same task, I am getting two algorithms, that is A1 and A2. Again, we are in the confusion that among these two algorithms, which one we have to select and which one we have to convert it into the program. इसको सॉल्व करने के लिए ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नोटेशन से पूरा आए. ओके, हम इधर स्ट्रक हो गए थे कि कन्फ्यूजन स्टार्ट हुआ था, उस कन्फ्यूजन को सॉल्व करने के लिए ये पूरा प्रोसेस है. ओके, नाउ से फॉर एग्जांपल आई हैव कैलकुलेटेड द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ A1. उसका आ गया वो ऑफ log n. उसके बाद इसको भी कैलकुलेट किया, देन आई गॉट इट एज O of n. Now tell me, among these two, which algorithm we select it as a best algorithm? A1. Because you can observe that O of log n takes less time when compared to O of n. So when I convert this algorithm A1 into the program, उसका time of execution क्या है, कम है when compared to the A2. So we will delete A2 and we will finalize A1. Just for this process only, we have taken help of all these terms. This is about how to finalize among many algorithms which one is the best algorithm. That is process 1. And the next one is अब हमको represent कैसे करना है. Say for example, for the algorithm A, I have calculated the minimum time, the maximum time and the average time. It is nothing but best case है, this is the worst case है, ये है average case. Okay? अगर आप मेरे लास्ट वीडियो में गए तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको बहुत क्लियर हो जाएगा और इजी समझ में भी आ जाएगा. ओके, सो फॉर एग्जांपल ए का मिनिमम टाइम है 10 सेकेंड्स, मैक्सिमम टाइम है 20 सेकेंड्स. से फॉर एग्जांपल एवरेज है 15 सेकेंड्स. रिमेंबर हियर वी डोंट राइट इट जनरली इन टर्म्स ऑफ सेकेंड्स. हम लोग एन फंक्शन के जैसे ऐसा लिखेंगे, एन स्क्वायर ऐसा लिखेंगे. फॉर सिंप्लीफिकेशन आई एम राइटिंग इट एज 10, 20, 30 लाइक दैट. ओके, आपको समझ में आना बोल के ऐसे लिख रहे हूँ, बट एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता है. ऐसा फंक्शंस में रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए हम लोग एफ ऑफ एन, जी ऑफ एन फंक्शन में रिप्रेजेंट करे हैं नोटेशंस को. ओके, अगर हमको ऐसा टाइम आया
ऐसा कैलकुलेट करें तो इतना इतना टाइम एस्टिमेटेड टाइम आया. एंड इफ आई वांट टू रिप्रेजेंट इन ओ नोटेशन, अगर हम एल्गोरिथम ऑफ ए को, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम ए को ओ में रिप्रेजेंट करना है, तो अमॉन्ग दीज थिंग्स विच वन वी टेक हियर, वी टेक द मैक्सिमम वर्स्ट केस 20 सेकेंड्स. अगर हम ए को ओमेगा में रिप्रेजेंट करना है तो कौन से टाइम लेंगे हम इधर, मिनिमम टाइम लेंगे. अगर हमको टीटा में रिप्रेजेंट करना है तो कितना टाइम लेंगे हम लोग, 15 सेकेंड्स बोल के लेंगे. Okay, this is for easy understanding. I am representing it as a seconds, but generally if you go for the real time, it won't be like a seconds. It will be in the form of a functions. Okay, this is representation है. और जनरली एक एल्गोरिथम को तीनों टाइम भी हम लोग कैलकुलेट नहीं करते, एक ही करते हैं, उसके बेसिस में ही सिलेक्ट कर देंगे ऐसा. ओके, दिस इज अबाउट द टर्म्स यूज्ड हियर. ओके, सो इट मीन्स दैट इफ आई राइट O of n square फॉर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम A1, इसका मतलब है इसको ज़्यादा से ज़्यादा, अगर हम O देखेंगे तो उसके मतलब क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको n स्क्वायर टाइम लगेगा. अगर फॉर द एल्गोरिथम A2 अगर हम ओमेगा में लिखेंगे से n, इसका मतलब है इसको अगर हम प्रोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो कम से कम तो n सेकेंड्स n टाइम लगेगा. अगर हम इसको टीटा ऑफ n+1 समथिंग लाइक दैट लिखेंगे A3 में, इसका मतलब है आपको n+1 भी में काम हो जाता है आपका एग्जीक्यूशन, या फिर इससे कम में भी आपका एग्जीक्यूशन हो सकता है, या फिर इससे ज़्यादा में भी आपका एग्जीक्यूशन हो सकता है. This is about the terms. Once again I am repeating you, these notations are very important topic for you. I hope it is clear for you. आप पहला वीडियो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखिए, उसके बाद ये वीडियो देखें तो आपको बहुत इजी समझ में आ जाएगा. जनरली स्टूडेंट्स विल थिंक दैट दिस टॉपिक इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर देम. I hope I made it as easy to you. If you really feel this explanation helps you, please give comments, and for more videos subscribe my channel. Thank you.